समथिंग, दिस इज स्पेशली यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन पार्ट. ठीक है, बता देता हूँ. The column of the cells is AB, row of the cell is 50. The cell address is simply AB50. Therefore, the cell address for the first last cell in MS Excel in 2013, A1 and XFD 1048576 respectively. ठीक है ना, ये हो जाता है सेल एड्रेस. सेल एड्रेस assists while using formulas. Excel saves the formula using cell address, thereby helps you to alter the content of the cell. Excel automatically changes the content of the formula on the foundation of a new data. ठीक है ना, तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर सेल एड्रेस जो यूज होता है वो फॉर्मूलाज के लिए ही यूज होता है. कोई भी फॉर्मूला तुम यूज करता है कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए, तो ये सेल एड्रेस को अप्लाई करने के बाद ही वो फॉर्मूला अप्लाई होता है. तब क्या होता है, तुमको वही एग्जैक्ट रिजल्ट मिलेगा वो पर्टिकुलर कॉलम से रोज का. ऑपरेशन इन एक्सेल. ऑपरेशंस इन एक्सेल मतलब जब भी हम लोग कोई कैलकुलेशन करता है तो कैलकुलेशन में हम लोग का क्या क्या सिंबल्स यूज होता है. सो इन प्रैक्टिकल लाइफ whatever we are using, that things only has been said here. Plus, minus, divide, into, and one more thing that is called power. अभी power क्या है मैं बता देता हूँ. प्लस माइनस इंटू डिवाइड ये तो तुम्हें आता ही है, तो थोड़ा सा ये टेबल को फॉलो करना है. ये पेज नंबर 65, जस्ट फॉलो द टेबल. पावर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द नंबर रेज्ड टू द पावर ऑफ द अदर नंबर. अभी मैं बोलूंगा 2 to the power 2, मतलब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है. मैं अगर बोलूंगा 2 to the power 3, मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है. अगर मैं बोलूंगा 4 to the power 6, मतलब 4 को 6 बार मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई मतलब इनटू. ठीक है. ऑपरेटर प्रीसिडेंस. It means the order in which the operators are executed when 2 or more operators are used in a single calculation. MS Excel follows the BODMAS rule in shown in a table. ठीक है, 5.2. BODMAS rule. BODMAS rule में क्या क्या आ जाता है? ब्रैकेट्स, पावर, डिवाइड, इनटू, प्लस, माइनस. ठीक है. BODMAS बोल के एक रूल होता है. B for bracket, O for orders, that is power, D for divide, M for multiply, A for add, S for subtract. ठीक है. According to the BODMAS rule only, the entire Excel calculations has been done. Calculations. How we are going to learn the reason Excel in a user? That everything in calculations, this thing only say that how these symbols are used to add up two numbers or to multiply two numbers. What are the symbols of these values? Now, this part I need to be read for you a little bit. Error result. If Excel cannot calculate a formula that you have entered in a cell, it displays an error value in the cell. As soon as you complete the formula and press the enter key, Excel uses the several error values which are shown with a hash sign. Okay? The table given below shows some of the common values along with their meaning and the reason displayed in the. पहला बात तो पेज नंबर 66 का जो फॉर्मेट दिया हुआ, जो टेबल दिया है, उसको तो तुम लोग अच्छे से पढ़ना ही है, देखना ही है. ठीक है. सो दिस थिंग्स आई विल नॉट लीव, ओके, बिकॉज इन प्रोजेक्ट वर्क आई थिंक दिस थिंग्स आई विल थिंक फॉर यू और सम अदर थिंग्स. सो छोड़ना नहीं है, टेबल्स वगैरह छोड़ना नहीं है, वो सब पूरा कंप्लीटली देखना. अभी यहाँ पे क्या बोला गया है, व्हाट हैज बीन सेड इन द एरर रिजल्ट.
अभी the formula which you are applying for that particular calculation, if there is any mistake, you have missed out something, then what will happen? When you will press the enter key, as soon as the result will appear with a hash key. hash मतलब ये जो होता है सिंबल, दोनों को दिखेगा कि नहीं, ये होता है सिंबल हैश, ठीक है, हैश की। आजकल बहुत मोबाइल में चलता है हैशटैग कम हियर बर्थडे सेलिब्रेटिंग, हैशटैग वी वेंट देयर, तो वो हैश, ठीक है ना, विद दैट हैश सिंबल द एरर रिजल्ट इज बीन शोन। What the table has been said here, common error values in Excel with their meanings and causes. अभी ये जो हैशटैग बोल के मैंने बोला है, ये एरर्स हो सकता है, किस तरीका से हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है, so you have to go through with the table. If you go through with the table, you will understand a bit that why these problems are arising in Excel while doing the calculation. Okay, so this was the chapter MS Excel formatting and calculation. Okay, so I believe class that I have able to touch the chapter and made you little bit comfortable so that you can understand things little bit better. Rest question answer parts have been given you, notes have been given you. Go through with that, read the chapter, go through with the diagrams. I believe at least something you will understand from the chapter. Okay, my motive is that you should not only learn the chapter or you should not only give question answers or examination, you should also get something from that chapter. You should get some fruitful result from that chapter. That is my motive. Okay, so that's all for today. I believe we will meet with a new chapter, and that is the visual basic, that is the last part of the half yearly exam. Quickly I am gonna make one more tutorial for you. That one is the last tutorial, and in that I will go through with all things, whichever is there, the important things, the important points, if there is anything left, and I will also discuss about the project work also in that video, and I will say you. Even I will give you in the WhatsApp also. Moreover, if you have got any problems in this chapter MS Excel, you can text me, you can call me, but ask me the genuine thing. Okay, don't call me or text me for anything only. Simply you have got something and you have asked me. No, you have to go through with the thing very properly. After that you call me or text me, I'll give you the resolution. Alright, so by this I am concluding the tutorial by today, and wait for the next tutorial. Until then, stay healthy, stay safe, stay away from coronavirus. Bye bye.